Good morning, student. Yesterday I have sent you an video, right? In that video, we have seen how is the life cycle of the butterfly. Metamorphosis in a butterfly. I have sent you the video. Everyone has seen that video? Yes, in that video, we have seen the whole life cycle of the butterfly. Now I am going to teach you the next part. The caterpillar of the plain tiger grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. Now, see, in that video we have seen a caterpillar grows so rapidly. Caterpillar की growth इतनी rapid होती है first 2 or 3 days में that it does not fit in a skin anymore. आपने देखा रहेगा वीडियो में कैटरपिलर स्किन से बाहर आती है. Yes or no? But under the old skin, a new loose skin is formed on the growing of caterpillar. But under the old skin, a new loose skin is formed. वो old skin के नीचे एक new skin form हो जाती है for the growing of caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin. फिर वो caterpillar क्या कर देती है, वो old skin को shed करती है, मतलब खींच के निकाल देती है. That is it molds. That is it molds. Okay, understood what is molds? You have seen in the video how the caterpillar removes her old skin and throws out. Okay, again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. Now again the caterpillar start eating the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days it molds a second time. After that what happens, फर्स्ट स्किन जब वो शेड करती है वो फिर से लीफ खाने को स्टार्ट करती है. यू हैव सीन इन द वीडियो. आफ्टर 2 or 3 days इट माउल्ड्स सेकेंड टाइम. फिर से वो सेकेंड टाइम वो क्या करती है, जो ओल्ड स्किन होती है वो निकालती है. इन दिस वे इट माउल्ड्स 4 times. हाउ मेनी टाइम्स? 4 times. 4 times वो माउल्ड्स की प्रोसेस होती है, स्किन निकलने की प्रोसेस होती है. इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 or 12 days. It remains in a caterpillar stage for how many days? 10 or 12 days. Okay. Just before the last molt, the caterpillar weaves a button of a silken thread. Now here you can see just before the last molt. जब last stage होती है molt की, जब 4th time वो molt करने जाती है तो caterpillar क्या करती है, weaves a button. यहाँ पे वो एक बटन लगाती है of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs. और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है वो हैंग हो जाती है यहाँ पे. इट सेल्फ फ्रॉम इट व्हेन इट माउल्ड्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ प्यूपा. अभी इस टाइम क्या होता है, जब वो माउल्ड करती है तो वो कौन से फॉर्म में आ जाती है, प्यूपा. इन विच फॉर्म? प्यूपा. यू मस्ट हैव सीन दिस इन द वीडियो. विच इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ. मीन्स ये प्यूपा स्टेज कौन सी है, नेक्स्ट स्टेज है बटरफ्लाई के ग्रोथ की. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis. What it is called? Underline the word chrysalis. What is the meaning of chrysalis? At the stage of development when it is covered by a hard case. See, this is the stage of chrysalis. The butterfly inside is covered with the hard case. It is called as chrysalis. It remains inside the chrysalis for the next 11 or 12 days. कितने डेज में रहते हैं? सी हियर ऑल्सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रिसलिस. अ बटरफ्लाई, दिस इज द पिक्चर व्हेन इट इमर्जेस डाउन फ्रॉम द क्रिसलिस स्टेज. इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलिस स्टेज फॉर नेक्स्ट 11 to 12 days. इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज. इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं खाते हैं. However, inside the chrysalis, important changes takes place in its body. लेकिन ये स्टेज में क्या होता है, in this stage there is a important changes in the body. They do not eat, but there is changes in the body. The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. Now, in this picture, you can see the growth of the plain tiger, means the butterfly. It is completed. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. See, you can see it is emerging out from that chrysalis stage. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. See, now it has how many wings? 4 and 6 legs. Okay,
All butterflies go through the stages of growth. Each and every butterfly goes through this stage. For reference, you can also again see the video which I have sent you for the life cycle of butterfly. Now, after the last stage, butterfly looks like this. Adult butterfly looks like this. Okay. Do you know, for each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed. The time of larvae take to emerge from the eggs is different for different types of butterfly. Means the time of larvae to take to emerge from the eggs का larvae time आने का बाहर different है हर butterfly के लिए. Types of butterfly. There is a great variety in caterpillars. You can see the variety in caterpillars also. Different types of caterpillars are of different colors. There are colors in the caterpillars also. Their body is long. Many types of caterpillars are hairy. उनकी body structure कैसी रहती है? Long रहती है. The body structure is long and it is hairy. Hairy means बहुत सारे hairs होते हैं उनके body पे. Various butterflies. See, these are the various pictures of butterflies. आपने भी देखे रहेंगे. आपको क्या एक ही कलर का बटरफ्लाई दिखता है क्या? नो, देयर आर मैनी डिफरेंट कलरफुल बटरफ्लाई. ब्यूटिफुल कलर बटरफ्लाई विंग्स हैव. यस और नो? So these are some pictures of that butterflies. Do you know, after we have cleaned the grain we buy, we store it in a box. जब हम grains clean करते हैं, we store it in a box. Grains means आपके घर में रहेंगे grains, wheat, बाजरा, rice, all these things are called grains. When we clean it, हम किस में रखते हैं? वी स्टोर इट इन अ बॉक्स. इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट्स इन इट. अगर ये एक्सपेरिमेंट आप देखें घर पे कि जब हम ये ग्रेन्स को एक बॉक्स में पैक करके रखते हैं, जब बाद में हम वो बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स वो ग्रेन्स में दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ वीट मीन्स गेहूँ, अगर आप उसमें देखो तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं उसमें. There can be insects in the grain stored in places like warehouses. Underline the word warehouses. Warehouses means a building where raw materials is stored. A warehouse means ऐसी building होती है जहाँ पे ये grains हम सब store करके रखते हैं. In the grocer shops or even in our homes. We have this in our grocer shop means जहाँ से हम वो grains buy करते हैं, वहाँ पे हम grocer shops बोलते हैं. Even in our homes. Now, if a female insect lays eggs in the grain, we cannot see them because of their tiny size. अगर कोई फीमेल इंसेक्ट ने एग्स ले किए इस ग्रेन में, we cannot see that. Why? Because the size of that egg is very small, very tiny. The warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow. और जो गर्मी मीन्स जो warmth उन्हें वो बॉक्स में मिलती है, where they store a grain is enough for them means वो उनके लिए बहुत enough है ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए. सो their growth continues inside the box. इसलिए क्या होता है उनके बॉक्स में, वो बॉक्स में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है. किनकी? वो इंसेक्ट्स की, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की. दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. उनमें भी सेम स्टेजेस है. कौन से? एग, larva, pupa and adult. When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. You can experiment this in your home. If you have a grain stored in your boxes or any other room, you will see there are small insects in the grains. You can see it in wheat, bajra, rice, whatever grains you have stored in your home. अगर आपके घर में कोई भी ग्रेन स्टोर करके रखे हैं, आप उस ग्रेन्स में एक बार जाके चेक कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखाई देंगे. वाई? बिकॉज देर आर सम फीमेल इंसेक्ट्स विच ले एग्स इन दैट ग्रेन्स एंड आफ्टर दैट इट ग्रोज इन एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. अंडरस्टूड एवरीवन द चैप्टर? नाउ what we have learnt. Now what we have learnt in this chapter? A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. Egg caterpillar, that is larva, chrysalis, that is pupa,
and adult are the 4 stages of life cycle of butterfly. These are the main 4 stages of the life cycle of the butterfly. We have seen this in the video also. The plain tiger butterfly lays its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar. When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis. The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings. So these are the points which I have learned in this chapter. Okay. Again I will send you the video for the reference. Thank you.